Good afternoon, everyone. My name is Umair, and I'm the research officer at Center for Law and Security. I warmly welcome our esteemed guest at this today webinar series. To begin our formal discussion, our today topic for the webinar is the brain drain in Pakistan, economic security challenges, and the way forward. To explore the cause, its impact on Pakistan's security challenges and propose the actionable solution to address the challenge. We are joined by two esteemed guests, uh, Dr. Usman Chouhan, advisor to President Case on Economic Affairs and National Development, and Dr. Noor Fatima, Associate Professor and Chairperson IR and Politics Department, IIUI. Thank you, ma'am and sir, for joining us today. So my first question will be from the Sir Usman Chouhan. Sir, could you elaborate what role do domestic issues such as political instability and limited job opportunities play in driving brain drain? And are these the only driver of brain drain in Pakistan? Sir, it's over to you. Thank you. Thank you very much. First of all, Assalamu alaikum, Azhar Saab again. Always a pleasure to be in your events. I also acknowledge Dr. Noor Fatima. We have been in many events together as well. Thank you. The question is about the push and the pull factors, really. Does the brain drain occur because there is a push out of your country or because some other places bring you? The truth is that they are both at play. The push factors mentioned were political instability or lack of participation or a lack of opportunities in terms of employment, salaries, savings, expenditures, etc. All of these economic variables, those are push factors which make you seek out opportunities elsewhere. Whereas pull factors are things that make other places more attractive. They would have those things that you seek. They would have the stability, low crime, clean streets, better traffic, etc. It can be a wide range of things. And the combination of these is often synergistic. So because you have a hard time here, you need to find some other place. That other place has it, therefore you go there. And it isn't just about, every person is idiosyncratic. It's a variety of factors that make it. If you are a single man, for example, you may be willing to take on challenges in more hardship environments. But if you have, for example, small children, you may prioritize the education system of the place you're going to. If you are a single man, you might be more tolerant of higher crime rates and be in a more rough and tumble area. But if you are with small children, you will be much more cautious about things. So your calculus changes depending on who you are, and the push and the pull are synergistic, but they apply at the same time. Right. Noor साहब, what do you think? मेरा ख्याल है पहले जरा थोड़ा इशू को समझ लें, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे. Do you think it is purely an economical issue, या फिर हमने पाकिस्तान में रिसेंटली देखा है ये जो बहुत ट्रेजेडी के हमने केसेस सामने आए हैं, and we have seen people जो कि यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे. Is it just an economic issue, या आपको लगता है कि ये सोशो कल्चरल इशू भी है कहीं ना कहीं पर? Thank you so much to the management of this center that they have invited. And there is always Chouhan Saab's discussion is value addition to the discussion. And I'm grateful that he's there also. जहाँ तक आपने बात की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ, तो मैं ये कहूंगी कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं हैं. फॉर इंस्टेंस वी से कि जब आप देखते हैं कि पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर इंस्टेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंस्टेंस, अच्छा फिर पर्सनल प्रोटेक्शन फॉर इंस्टेंस एज फीमेल, मैं इसको आई कैन बी सेंसिटाइज टू दैट इश्यूज आल्सो, ठीक है ना. आपकी इन एडुकेट पर्सनल प्रोटेक्शन जो है, अच्छा फिर जैसे उस्मान साहब ने इसको हाईलाइट किया, अनक्लीन सराउंडिंग्स फॉर इंस्टेंस, राइट. हम सिर्फ अपने घर की बात नहीं करते. व्हेन यू गो टू द स्ट्रीट्स, यू गो टू द इंस्टीट्यूशन, यू कैन सी क्या हमारे हालात होते हैं. इसके अलावा एक और चीज जो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अगर करें, बीइंग वुमेन भी, कि जो आपकी डे केयर की या चाइल्ड जो आपकी रेयरिंग फैसिलिटीज हैं, वो आपके पास, अगर मुझसे बात करें तो मैं कहूंगी जी बड़ा आसान है. बाहर देखे जी, मैं बच्चे को साथ यूनिवर्सिटी लेके जा सकती हूँ, वहां प्रोटेक्शन है, ऐसा है वैसा, यहाँ भी है. लेकिन यहाँ वो आप सिचुएशन देखते हैं उस अंदाज में फैसिलिटीज नहीं है. फिर ये कि
इसके अलावा जो हमारी यूथ है, आप देखिए ना कि इस वक्त आपकी जो यूथ है उसकी 35% यूथ आपकी ऐसे जिसके पास जॉब्स नहीं है। वो एक आप हाँ। इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, लेकिन वो भी हमारा इकोनॉमिक प्लस गवर्नेंस इशू, इकोनॉमिक प्लस अच्छा। पॉलिसी इशू है हमारा, कि हमने उस बल्ज को कहीं एंटिसिपेट नहीं किया कुछ अर्सा पहले तक, कि आपके पास मिडिल एज और लेट एज से ज्यादा किसकी जरूरत थी, कि जहां हमने जॉब उस अंदाज में क्रिएट नहीं की जो कि हमें, जिसकी वजह से आज हमें ब्रेन ड्रेन, वी आर फेसिंग दैट। सो इट हम्म। इज नॉट ओनली द जॉब अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक इट्स अ गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। फेलियर फॉर मी द मोस्ट। अच्छा, लेकिन उस्मान साहब, इसको आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप किस तरह से कहते हैं कि एक तरफ क्योंकि स्किल्ड लेबर है वो तो जा रही है, हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स, लेकिन अनस्किल्ड जो लोग हैं वो भी जो है वो जा रहे हैं, जिस तरह से मैंने मेंशन किया, ये जो लोग जिनका हमने देखा है कि जो इलीगली भी जो है वो बॉर्डर जो है वो क्रॉस करते हैं। सो इसका, और फिर इसकी डिबेट का दूसरा पहलू ये है कि जी हमें रेमिटेंसेज आती हैं। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस सब का जो है वो आप क्या देखते हैं, उसको हम किस तरह से उसको हम देख सकते हैं डिफरेंट, कि क्या हमें फायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है इसका। जी, बड़ा गहरा सवाल पूछा आपने। उसी अंदाज से मैं इसका एक जूम मैनी और एक गहरा ही जवाब देना अर्ज करना चाहूंगा। The first point I would like to make is economic in terms of cost benefit. And my firm belief is that everybody should be wherever they feel the happiest, happiest in the sense of optimizing themselves and maximizing their utility, as we say in economics. If that is Pakistan, should stay in Pakistan because you have family, culture, etc. that work. If you have opportunities abroad, just everybody should be where they are happiest. So that will sort things out in the best possible manner. हम्म। Ultimately, if there's places that you think are so nice, but everybody ends up there, they actually end up quite terrible. Like San Francisco is a hellhole now, but there was a time when everybody wanted to go there. So इस तरह करके everything really adjusts. आपकी जो बात थी, is it a net cost or benefit for the society? And we're talking about the हम्म। emigrant society, not the immigrant, हम्म। not the receiver, but the giver of these people. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बजा फरमाया है कि इससे remittances आती हैं, so that is a larger portion of our foreign exchange now earning per year rather than exports, because you get about 3 billion per month from remittances, mostly from the Gulf हाँ। countries, and that's about what's 36 billion, and your exports are about 30 billion. So और हम्म। remittances बढ़ती जा रही हैं. There हमारी हमारी are बिगेस्ट एक्सपोर्ट हैं ये जो लोग yes, बाहर जा yes. रहे हैं। Bilkul sahi. This labor is our biggest export. Manpower is our biggest export. Earning foreign exchange is a very serious priority for our economy, so I think that is a good thing. But the downside of it is that the people who are going, if they're on the higher end, you're losing skills. In the lower end, you're also losing labor. But your argument then would be you have surplus labor. Your population grows at 2 to 3% per year. हम्म। You're adding about 60 lakh people per year. 60 हम्म। lakh people. So can you, even Germany cannot create 60 lakh jobs in a year, let alone a country like us. So it can't simply absorb it. The truth about this matter is that any society that felt much emigration, like हाँ। Ireland, when the potato famine happened, the ratio of people to resources was low. But today, अच्छा। Ireland, because of the economy, because of technology and governance, is now short on people, and they're desperate to bring in people, the same country, same culture, same everything. हम्म। So you can expand the resources you have. And that's why even a country like China, which was very scared about having too many babies, then one child policies, today they're facing a deficit and they wish they had more people. So ये एक तराजू होता है और उस पे वजन एक जानिब या दूसरी जानिब जा सकता है. राइट। अच्छा, उमर। इस डिस्कशन को थोड़ा करंट लेवल पे लेके आते हैं कि माय क्वेश्चन विल बी फ्रॉम डॉक्टर नूर. मैम, could you spread the light on the how brain drain is impacting Pakistan economic security and long-term development, as we have seen that approximately 0.8 million people left Pakistan in 2023. हम्म। ये एग्जैक्टली देखिए, ये सिक्सटीज में भी ये फिनोमेना था, लेकिन ये अब जो है इस वक्त हम जो करंटली देख रहे हैं, दैट इज बिट हायर साइड। और उसके कुछ रीजंस जैसे मैंने बताया, और उसमें कुछ रीजन जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फिर हम पॉलिसीज को ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो भी एक रीजन है।
हमेशा से जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनका उस्मान जो ब्रेन ड्रेन पे कंसर्न होता है, लेकिन हैविंग सेड दैट कि ये भी है कि हमें पिछले अगर हम 1-1.5 साल में देखें तो हमें कुछ $30 बिलियन के करीब, मैं ऐसे स्टडी देख रही थी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में मिले हैं। बट इसको हमने देखना है कि इसकी हमने कॉस्ट क्या पे की है या हम क्या कॉस्ट पे करेंगे हम्म, फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी एंड एज वेल एज हमारा आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है। देखिए ना, वो देखने की जरूरत हम्म, है कि जब आप व्हेन यू आर स्पेंडिंग स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी ऑन दोज पीपल, वो भेज तो रहे हैं लेकिन क्या वो उसको उसको सफिक है वो सरे उसके लिए जो जिसके लिए आप उसको फ्यूचर बेसिकली आप उनका डिपेंड कर रहे थे कि फॉर इंस्टेंस के जो कॉम्पिटिटिवनेस पाकिस्तान में होती और वो उससे आप एक्सपोर्ट करते अच्छा, और उस एक्सपोर्ट से जो आपको आपका जो डेफिसिट रिड्यूस होता, क्या ये उससे ज्यादा है? होपफुली ये उससे ज्यादा नहीं है। एट द अच्छा। मोमेंट तो नजर आ रहा है, बिल्कुल आई एग्री विद चौहान साहब, एट द लेकिन डॉक्टर मोमेंट साहब आपको उसका लग रहा एक है। एक उसका एस्पेक्ट तो ये भी है कि वो यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो चीजें हैं, तो हाँ, मे नहीं बी लेकिन जो देखिए फिर स्किल ये है तो जो बिल्कुल वो आपकी भी बात सही है। उनकी जाया जाती। जी। हाँ, नहीं, बात वही आ रही है ना कि इस वक्त इसका जो एक एसेट है वो हम उस वैल्यू पे नहीं जाने दे रहे जिस वैल्यू पे वो हमें पे कर सकता है फ्यूचर में। तो हमें ओके। ये देखने की जरूरत थी कि जो इंटेलेक्चुअल्स आपके काम करते हैं, जो डॉक्टर्स आपके काम कर रहे हैं, वो इवन लेबर, अगर ये आपकी स्किल लेबर है और जाहिर है वही पेड ज्यादा वैल्यू उसी लेबर की है, तो वो लेबर आपकी पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है इस वक्त? आई होप के उस्मान भी इसके ऊपर बात करेंगे, सॉरी चौहान भी। पाकिस्तान में आपकी लेबर एक्सपेंसिव है लेकिन हाँ, लेबर की कॉम्पिटेटिवनेस नहीं है, वो नहीं बढ़ी है। लेबर की चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है कि हर साल चूंकि उसकी लेबर के लिए उसकी बढ़ती हाँ। है ना, कहते हैं कि इनकी इंक्रीज कर दें आप उनका वेज। पॉइंट अच्छा। ये है कि वेज जरूर इंक्रीज हो गया है लेकिन इन हाँ। माय व्यू उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज नहीं हुई है ओके। पाकिस्तान में ना। तो वो क्या हुआ है कि वो अगर कॉम्पिटिटिवनेस रहती तो उसका बेनिफिट पाकिस्तान को ये होता था इन द लॉन्ग रन, आपको एक्सपोर्ट्स में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट और अच्छा। कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी कम होती। वो जो अच्छा। चीज है जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया था फॉर फ्यूचर, वो आप लॉस उसमें अच्छा। जा रहे हैं, लेकिन मैं इसमें इसलिए ब्रेन ड्रेन। एक चीज मैं जी जी। डॉक्टर डॉक्टर ज- उस्मान चौहान साहब से मैं समझना चाहता हूँ, वो ये कि इकोनॉमी और साइकोलॉजी का भी हम थोड़ा सा इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर नौजवान है, अगर आप किसी भी नौजवान से पूछें तो वो क्या करना चाहता है, तो उसका शायद पहला जवाब ये होता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, या अगर उसे ऑप्शन दी जाए कि उसने पाकिस्तान में रह के काम करना है या उसने कहीं बाहर जाके काम करना है, तो वो आई थिंक जो एक जनरल इंप्रेशन है कि वो यही कहेगा मैं बाहर जाकर जो है वो काम करना चाहता हूँ। सो ये आपको ट्रेंड या ये साइकोलॉजी जो पाकिस्तान के जो खास तौर पर नौजवान हैं वहां पर जो है वो क्यों नजर आ रही है उनमें? Gee, bilkul. You have hit the nail on the head. But there are some surprising statistics, two that I want to mention here. The first is that the surveys that have asked people, young people, if they want to move abroad, what percentage answer, it's not as high as we think. It is below 40%. It's actually below 30% who say कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ. But we live in an urban Islamabad, highly educated bubble, and so we get this impression. लेकिन इतने ज्यादा नहीं, मेरा ख्याल था कि 99% बाहर जाना चाहते हैं. हाँ It's not जी like जी that. जी। So that we have that अच्छा। issue. The second issue is more about just that Doc Saiba कह रही थी, factors that are other extraneous to economics. उसमें आपकी बात आती है psychology. There are हम्म, surveys such as PIDE surveys which ask young people what is their biggest issue, and it's actually with dissatisfaction, source of dissatisfaction, मायूसी की जो अच्छा। बुनियाद है. It is the lack of dignity that they get. कि कोई हमारी सुनता नहीं है. Because the older generation here treats the young people जिस तरह मुर्गी चूजे को कि चलो वो एक और नया अंडा दे देंगे. पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है बहुत। Gee, जी। bilkul, it's paternalistic, but also like treating them as surplus. I'll just pop out another kid. It doesn't really matter. The individual, वो जो इंफरादियत है, जो हर बंदे का हाँ। हक होता है, वो इंफरादियत उनको नहीं अता की जाती मुआशरे के तौर पे. So what I therefore conclude is there are things we can do outside of just the economic stuff. जिस तरह NOC culture हटा दें, लोग business खोलें, हाँ। वो सारी चीजें ठीक। हैं. But giving dignity is something that we all do to each other sitting here. It's something we can do to the young people, make them feel like they're heard, make them feel that they're part of the system. That's already a big deal. हम्म, ठीक।
जी। सेशन को थोड़ा हमने ये जान लिया कि क्या problems है. We have learned that there are some political stability problem is there, societal problem is there, and some are institutional problem are also there. But at last, we have to focus on the what are the policy measures can the government implement to reduce the brain drain in Pakistan? What are the recommendations for the institutions or for the society overall in Pakistan? From you, Dr. Noor. डॉक्टर नूर साहबा से पहले जरा पूछ लें। अच्छा, जी 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 जी, श्योर श्योर। अच्छा, इसमें आप देखिए ना कि ओवरऑल आप अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम साथ उसको लिंक रखेंगे गवर्नेंस को, क्योंकि गवर्नेंस इंप्रूव है तो बेसिकली इकोनॉमी भी आपकी इंप्रूव होती है। उसमें सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ जी कि इकोनॉमी को ट्रैक पे आना चाहिए। अच्छा। अभी स्टेबलाइजेशन पीरियड चल रहा है और अभी देखिए इसमें बहुत सारे प्लेजेस हैं, वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है और आपको आईएमएफ भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, और इन्फ्लेशन की बात भी हम करते हैं डाउन, लेकिन ये हम इसको कैपिटलाइज कितना कर सकेंगे, कितनी देर हम इसको मेंटेन कर सकेंगे, लेकिन क्या वो इसका आपको कोई पेस। दो तीन मेजर्स लगते हैं जो स्पेसिफिकली हम ब्रेन ड्रेन को ट्रीट कर सके, या फिर जिस तरह से डॉक्टर उस्मान साहब ने कहा कि वो जो बैलेंस है जो हमें एक खास किस्म के हालात में चाहिए होता है, वो बैलेंस इस वक्त हम अपनी इकोनॉमी वो के लिए। इस जी एग्जैक्टली ये मैं जो सब चीज मेंशन करी है उस बैलेंस के लिए ही है ना। देखिए कि आपको, आप फॉर इंस्टेंस आपको इस वक्त कहा है वर्ल्ड बैंक ने कि जी हम आपको $20 बिलियन देते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट होगी खास तौर पे जो आपका क्लाइमेट चेंज के अंदर है। अब हम देखें कितना बड़ा आपके पास मौजूद है सेक्टर एंड रिसोर्स के जिसमें आप अपनी यूथ को, अपने 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 प्रोफेशनल्स को ला सकते हैं कि जी क्लाइमेट फाइनेंसिंग में इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिस में पाकिस्तान के पास प्रोफेशनल्स ही नहीं है, सही। फॉर इंस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी, फिर ये जो हमारा आप देखें ना कि इस वक्त आपका कोरोना के बाद जो सर्विसेज सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इस वक्त आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर। सर्विसेज सेक्टर के अंदर हमारी यूथ जो है, और उसके लिए सर्विसेज सेक्टर के लिए आपको ह्यूज इंडस्ट्री भी नहीं चाहिए है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ फैसिलिटेशन चाहिए। तो बच्चों के लिए बेसिकली अभी उस्मान सॉरी बात कर रहे थे चौहान के बड़े सिटीज में बैठ के लग रहा होगा। मैं बिल्कुल मैं समझती हूँ कि आपने जो बात की थी कि ब्रेन ड्रेन बहुत तेजी से बच्चे जाना चाहते हैं, 100% जाना बेशक नहीं, लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज आई बिलोंग टू यूनिवर्सिटी, तो हम तो लेटर रेफरेंसेस देते हैं बल्क में डेली। कोई बच्चा ये नहीं है जो ये कहे कि जी मुझे बाहर नहीं जाना, 100% बच्चा कहता है कि बाहर जाना है। बाकी यूनिवर्सिटीज में मैं पूछती हूँ कि क्या ये हमारे साथ है ये बात सब, तो उसकी उसकी तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा ना। और इसलिए कि हर बच्चा कहता है जी कि ये सेमेस्टर खत्म होता है, हम 8 सेमेस्टर के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो उनके अंदर वो जो सिक्योरिटी का इशू है वो भी, एम्प्लॉयमेंट आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गवर्नर से एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उस्मान साहब, योर ट्रिक, आपके ख्याल में क्या ट्रिक हो सकता है गवर्नमेंट के पास वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए? जी बिल्कुल ठीक। If you want to take an extreme measure and you really want to stop people going abroad, you can simply do what the Soviet Union did, exit visa, जो आप कभी देते भी नहीं थे. You need a visa to leave your country, not just to arrive in another country. USSR करता था. That's the extreme point. And I don't believe in that because I think that the mobility of people is actually advantageous in the long run. Ana or jana amduraf. I spent 15 years abroad and then I came to serve my country. Maybe I'll go abroad again and then return. That's a very good thing. I actually see the best source of stopping people from going out voluntarily is to bring those who are outside to come back, which is to say the link with the overseas Pakistanis has been broken for the last 3 years. They have no interest in what is happening in this country and only bad mouthing what is happening, perhaps to an exaggerated extent. But the overseas Pakistanis have three things that we need that will help the people here. The first is that they have financial capital. They really want to invest here. They have more money than we need from any agency such as the World Bank. Forget all that. They have like at least
200 billion in assets because they've done well abroad, multi-generational, they're fine. The second is that they have human capital. They've been educated abroad. If not, their kids have been or grandkids have been. They're part of a very nice system. उनका सॉफ्टवेयर वो जो है वो बाहर वाला है, जो सॉफ्टवेयर यहाँ का खराब हो चुका है, उनका सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर हमारे जैसा होगा, सॉफ्टवेयर ठीक है. And the third thing is the network capital. So they are the missing link because they will bring businesses from abroad because those people need some intermediary to do business here, somebody who can be the liaison between them. Overseas Pakistanis have a contact here, they have a contact there, they are trustworthy, they have earned that name, so they become the missing link. Otherwise, आपकी investment में ये जो break आई हुई और सिर्फ G2G काम होता है और वो भी मुश्किल से, it has to go to B2B and P2B. So linking to the overseas Pakistanis unlocks so many economic opportunities. And one other thing, they will also come back and tell you the stories. Canada is a real mess right now. Trudeau की सरकार गिर चुकी है. US is a third world country, if not fourth world country. यूरोप के भी बड़े मसाइल हैं. तो ये आके आपको बताते हैं कि वहां भी दूध की नहरें नहीं बहती. बेहतर है कि हम पाकिस्तान को ठीक कर दें और सब ठीक हो जाएगा. That will be the answer. Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Indeed, it was a great discussion for listening. As we conclude our today's webinar, I would like to thank our distinguished speaker, Dr. Noor. It is a very pleasure to have you. Thank you, ma'am. And Dr. Usman Chouhan. Thank you, sir. It's an honor to have you. You're welcome. Thank you, Ji. Thank you. And expertise. We appreciate your participation and hope